Hello students, today our chapter is life process. It is the chapter 6 from your NCRD science book. So first of all, just tell me, how will you identify a living, alive man or a dead man? How will you identify if an organism is alive or not alive? Yeah, you will tell me that he seems, uh, he or it, whatever the organism is, the organism has a body movement or its growth. So, if an organism is has tendency to grow, then it seems like it is alive. Or if he's having a movement. So let's read. So इस तरह से तो आप you can identify. What are the another way from which you can identify? So how do we tell a difference between what is alive and not, what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on a street, we know that these are living things. What if dog or cow or man are asleep? What if they are asleep? We would still think that they are alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. Yes, we can measure their pulse, or we can feel their pulses, and we can know that they are alive. What about plants? So what about plants? We can't measure the pulses. They don't have a heartbeat. So we can identify them by what? Yes, we can, with the growth and the green color. How do we know that they are alive? We see them green. Some of you will say, okay, so as I told you that we can see them green, but what about the plants have a leaves of other color? So they are asking what about the plants which are having a different color, red, yellow, green. I mean, other than green, which is red, yellow, pink, and all. They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, but कुछ समय के लिए वो लोग ग्रो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो अलग है, मतलब लीव्स ग्रो करते हैं. Okay, so in other words, we tend to think about some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence of being alive. So we think of sort of movement, we think of movement, pulses, growth related, which gives evidence of being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive. Means if plants, we cannot identify if a plant is growing alive in one day. We need many days. We need 1 month, more than it, to identify it. Okay, so they are telling एक मतलब तुरंत ही हमें नहीं पता चल जाएगा कि वो visibly वो alive है or not. Some animals can breathe without visible movement. So there are some animals which can live without visible movement. So using visible movement as the definition, as the defining character of life is not enough. Just a visible movement, like viewing the physical appearance, doesn't tell the character if anything is alive or not. It's not just enough. We need some more information. Movement over very small scale will be invisible to the naked movement of molecules. So the movement of molecule is not visible. It is not naked eye. For example, is this invisible molecular movement necessary for life? The molecular movement is necessary for life. We are asking a question. If we ask the question to a professional biologist, they will say yes. So if you
You may ask a biologist, and they will say, yes, it is necessary. It is the molecular movement is necessary for life. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. Okay, so some viruses do not show any molecular movement until they infect some cell. जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वायरस है हमारी बॉडी में. That is partly why there are controversy about whether they are truly alive or not. There are some controversy about if they are truly alive or not. It's only the controversy. Why are molecular movement needed for life? So why molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. So in earlier classes, you must have seen that living organisms are well organized. They are well organized structures. They can have tissues. They can have a tissues. Tissues can have cells. Cells have a small components in them, and so on. So in ninth standard, you have seen a body with organs, organs with mm, muscles and tissues, tissues with cells, cells with all the organelles like mitochondria, nuclear, then many like cytoplasm. You must have learned this in class 9. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breakdown over time. So, due to different effect of environment, all the structures, मतलब जो body structures environment पे depend करते हैं. The sentence says that this. If order breaks down, the organism will no longer be alive. If any one of the order would be break down, the organism would not be able to alive. So the living creature must be keep repairing and maintaining their structures. Since all the structures are made up of molecules, we must move molecules around all the time. So there is a movement in the body. What are the maintenance process in living organisms? So living organisms की जो maintenance process क्या होगी? What are life processes? The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Okay, so the maintenance function means if we are standing still or we are sleeping, but then too our body is working, the cells are working, the muscles are working. So not the muscles, but all the molecular activity are being practiced in our body. When we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. As I told you, even if we are just sitting in a class, the process which together form this maintenance job are life process. Okay, so the process highlight करना just you guys just please highlight it this line. The process which together perform the maintenance job are called life process. Okay, so the many processes come together, combine together to maintain the life are called are together called life process. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, so the maintenance process are required to prevent the damage. Energy is needed from them. Okay, so we need energy. Energy comes from the outside of a body of individual organism. So energy is we get energy from outside sources. So like
We eat food. So we eat food and we get energy. So we get energy from outside source, which is we eat plants. So plants, I mean not plants, but the products of plants. So if we eat them, we get energy. So there must be process to transfer source of energy from outside the body to organism, which we call food. Okay, so कुछ तो प्रोसेस होगी, दे आर टेलिंग लाइक कुछ तो प्रोसेस होगी जिससे हम फूड इनटेक करते हैं जो एनर्जी में ट्रांसफर होता है. A process we commonly call nutrition. So this is the process we call nutrition. If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. So we also need a raw material from outside since life on earth depends on carbon based molecules. Okay, so in chemistry you may have learned or going to learn that our body is made up of carbon. Carbon is a I mean atom which is satisfied with all other atoms. It can combine with, वो बहुत फ्रेंडली होता है, सबके साथ मिक्स हो जाता है. ओके, समथिंग लाइक दैट. Depending on the complexity of their carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional process. So, depending on the complexity of carbon sources, मतलब complexity पे depend करता है कि organism कौन सी kind का nutrition और कौन सी process से nutrition acquire करे. The outside sources of energy could be quite varied, since environment is not under the control of the individual organism. So it also depends on environment कि हम कौन सी टाइप से न्यूट्रिशन ले रहे हैं. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. Must be finally converted into a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules that body need to grow. अभी जो एनर्जी में तो ट्रांसफर हो गया, हमने फूड खाया, फूड एनर्जी में ट्रांसफर होगा. अब ये एनर्जी एनर्जी कहाँ जाएगी, सेल्स में जाएगी. सेल्स क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, मिटोकॉन्ड्रिया में विल गेट एनर्जी एंड वो एनर्जी के लिए हमें कुछ मेंटेनिंग लाइफ काइंड ऑफ मूवमेंट्स के लिए एनर्जी किसके लिए चाहिए, मूवमेंट्स के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फॉर दैट. मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. For this, a series of chemical reaction in a body needed. So, chemical reaction in body is needed. Oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. Okay, so oxidizing and reducing in chapter first you must have learned. So breaking down of molecules के लिए there are very main reactions. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. So इसके लिए अभी this is the process. अभी हमने जो ये पढ़ा, this paragraph was talking about elementary canal like nutrition, and this paragraph is telling us about respiration process. The process of acquiring oxygen from outside the body and then to use it in the process of breaking down of food sources for cellular needs is what we call respiration. Okay, so the process when we acquire oxygen from outside, we oxygen is not present in our body, we acquire it from our environment, and that's why we say that don't do pollution. Okay, and to use it in the process of breaking down the food. अब एक फूड तो खा लिया, लेकिन फूड को और तोड़ने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन जो उनकी सेल्यूलर नीड्स को फुलफिल करता है. मतलब सेल के अंदर जाने के लिए it need to be broken down. So this food is broken down by oxygen, as we call respiration. Okay, so इसे हम respiration.
You need to underline this line. The process से respiration. In case of single cell organism में क्या होता है? No specific organs are taking in food. Exchange of gas or removal of waste may be needed because the entire surface of organism in contact with environment. मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? नो ऑर्गन सारे एक ही मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता. दे डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर. दे हैव अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. एक ही जगह से वो खाते हैं, एक ही जगह से वो एक्सक्रीट करते हैं, एक ही जगह पे डाइजेशन होता है. सब कुछ एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, ऑल आर बीन एक ही सरफेस पे होता है. So exchange of food or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is contact with the environment. But what happens when the body size of organism increase and the body design become more complex? Okay, so what happens if the body structure become more complex, like we humans? In multicellular organism, all the cells may not be direct contact with surrounding environment. अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते एनवायरनमेंट में. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all cells. तो सिंपल एक डिफ्यूजन से ही पूरे सेल की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती. We have seen previously in multicellular organism, various body parts have a specialization in functions they perform. मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे बॉडी पार्ट्स अपने सारे ऑर्गन्स हैव वेरियस specific functions. We are familiar with the idea of different specialized tissue. Okay, so you must have idea of specialized tissue with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. ओके, सो आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा ही होगा कि सबके अलग अलग काम होते हैं. तो ये फूड ऑब्टेनिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन ऑब्टेनिंग का एक अलग प्रोसेस होता है. तो दिस प्रोसेस, however, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up in one place in the body of organism while all parts of body need them. This situation creates a need of transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. So this is the circulation system. Okay, so here we read about what we can say is first we read about food intake, then with respiration, oxygen चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, transportation चाहिए. कोई मीडियम चाहिए, ब्लड चाहिए जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सके सब मटीरियल. मतलब फूड और ऑक्सीजन तो मिक्स होके ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन अब क्या, अब उसे ट्रांसपोर्ट सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड करेगा. तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए प्रोसेस. When a chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for cells of our body but could even be harmful. कार्बन सोर्सेज के रिएक्शंस जो कार्बन सोर्सेज के साथ होते हैं और ऑक्सीजन एंड एनर्जी जनरेशन के साथ ऑक्सीजन, तो वो हार्मफुल होते हैं हमें. जो रिएक्शन होते हैं उसके बाय प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीजन ने फूड के साथ रिएक्ट किया, उसके साथ एक और प्रोडक्ट बना जिसको हम कार्बन बोलते हैं. तो वो कार्बन हमारी बॉडी में हार्मफुल है. दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. कुछ हम जो फूड खाते हैं वो भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता जो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब हार्मफुल हो सकता है. तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज द एक्सक्रीशन प्रोडक्ट और फूड में
some food are excretion product. Again, if the basic rules of for body design and multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that transportation system need to be transport waste away need to transport waste away from cells to the excretory tissue. तो अभी ये जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले वो ये सब शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया था इसमें. So you need to answer all these questions, four questions, and you need to write answer in the comment box. When we walk or ride a bicycle, we are usually अभी हम न्यूट्रिशन पे जाते हैं. न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है? When we walk or ride a bicycle, we are usually using energy. तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम एनर्जी यूज करते हैं. When we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. मतलब जब भी हम कुछ काम भी नहीं करते फिर भी एनर्जी हमारे बॉडी के वर्किंग के लिए, सेल्स के वर्किंग के लिए चाहिए. We also need material from outside in order to grow up, develop and synthesize protein and other substance needed in the body. मतलब हमें बाहर से भी कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जिससे हम डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके और प्रोटीन और वो अदर सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर सके जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट. तो ये बाहर का जो प्रोडक्ट है जिससे हम डेवलप कर सकते, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स और सब्सटेंस हम एक्वायर कर सकते, ग्रोथ कर सकते हैं. तो फूड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ, सिंथेसाइज and for acquiring minerals, proteins and all. Okay, so ये भी introduction है. How do living things get their food? Living things को food कहाँ से मिलता होगा? The general requirement of energy and material is common in all the organisms. मतलब फूड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जनरल है, सबको ही चाहिए, बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे. सबको एनर्जी तो चाहिए लेकिन डिफरेंट वेज में सबको मिलती है. सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. So कुछ सिंपल फूड मटेरियल भी यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है. लाइक प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए उन्हें. दिस ऑर्गेनिज्म अदर क्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया वो भी अपना खुद का खाना बनाता है और ग्रीन प्लांट भी अपना खुद का खाना बनाता है. ऑटो मीन्स खुद का खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सब्सटेंस. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी. तो ये खाते तो है लेकिन उसे हमें ब्रेक करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में. टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम. एंजाइम्स क्या करते हैं, उन्हें हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में. तो यू नीड टू अंडरलाइन दिस, like you need to write some complex substance have to be broken down into simpler one before they are to be used for the upkeep and growth of body. So the organism uses a biocatalyst for this purpose, which is called enzymes. Yes, with this exam you need to write the definition of enzymes. Thus, the heterotroph survival depends on directly and indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. मतलब heterotroph
और ऑटोट्रॉफी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट तो होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कार्बन ऑटोट्रॉफिक आई हैव टोल्ड यू दैट खुद का खाना बनाते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं process uh, use water, carbon dioxide, sunlight to form glucose and produce oxygen. This is the process by which autotrophs takes in substance from the outside and convert them into the stored form of energy. मतलब बाहर से सब्सटेंस लेते हैं उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विल स्टडी हाउ दे टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। मतलब ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। मतलब जो immediately यूज नहीं होते उन्हें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। Which serves the internal energy reserve to be used as and when required by the plants। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो जब भी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनके पास ले लेते हैं। A somewhat similar situation is seen in us. The sum of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। मतलब कुछ एनर्जी स्टोर होती है तो उसे हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं तो ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन आ गया हमारा तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और पानी बना। तो 6CO2, 12H2O in the present when six molecules of CO2 and 12 molecules of H2O combine in the presence of chlorophyll and sunlight, they form glucose, water, 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. This process is called as photosynthesis process. Let us now see what actually happens when during the process of photosynthesis। अब photosynthesis के process में क्या actually होता है? Following events occur during this process: absorption of light energy by chlorophyll। तो क्लोरोफिल जो होते हैं इधर पिगमेंट्स छोटे छोटे पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं क्या? सनलाइट, लाइट एनर्जी, सन की जो लाइट एनर्जी होती है। The conservation of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। तो अभी क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होना, वाटर जो H2O है उसका जो फॉर्मूला H2O है तो वो हाइड्रोजन एक अलग हो जाता है और ऑक्सीजन एक अलग, दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज वी लर्न दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो एनर्जी देते हैं प्लांट्स को। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। मतलब तुरंत ही नहीं ले लेते, देर लगते। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप carbon dioxide at night and prepare an immediate which is acted upon by the energy absorbed by a chlorophyll during day। मतलब सारी तुरंत ही एक्टिविटी नहीं होती। मतलब डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते एंड prepare an intermediate, sorry not immediate था, it was intermediate which is act upon the energy absorbed by the chlorophyll during। तो तभी क्लोरोफिल इंटरमीडिएट की तरह यूज करते हैं। लेट
us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross-section of a leaf under a microscope, shown in figure 6.1 here, this is the microscopic view, you will notice that some shells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. These uh, dots, these small dots are called chloroplasts. See, here it is written with chloroplast contain chlorophyll. This you should remember क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. Let us do an activity which demonstrates the chlorophyll is essential for photosynthesis. Take a potted मतलब इधर ऐसा कहा है कि एक अलग अलग टाइप के प्लांट लो, उनको 3-4 दिन तक एक रूम में रखो तो उनका जो स्टार्च है, स्टोर मटेरियल वो यूजअप हो जाएगा, उनकी लाइट नहीं आएगी तो ना कि प्लांट्स को बाद में 3-4 दिन के बाद 6 आवर्स तक उन्हें सनलाइट में रखो. एक एक लीफ तोड़ो, दोनों प्लांट्स में थे मतलब वेरिड प्लांट्स चाहिए, अलग अलग प्लांट्स लेने हैं. एक मतलब मनी प्लांट या फिर कोई भी और मैंगो प्लांट और वॉटेवर, उनके लीफ प्लग करने हैं. फिर उनमें जो ग्रीन एरिया हमें दिखता है उन्हें ट्रेस करना है पेपर. बाद में कुछ मिनट एक बॉइलिंग वाटर लेना है, बॉइलिंग वाटर में उस लीफ को डिप करना है. कुछ मिनट के बाद इमर्स इन द बिकर कंटेनिंग अल्कोहल. मतलब उसके अंदर जो अल्कोहल है वो सब निकल जाना चाहिए, इतना हीट करना है. उनका कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा. बाद में आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उन्हें डीप करना, तो उसका कलर टेक आउट द लीफ एंड रिंस आउट द आयोडीन सॉल्यूशन. ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ कंपेयर विद द फिनिशिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग. मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा उनका उसका कलर. Now let us study how the plants contain carbon dioxide. Sorry, plants obtain carbon dioxide. In class 9, you had talked about stomata, which are tiny pores present in the surface of leaves. Okay, so stomata you must know the tiny pores present होते हैं leaves पे, उन्हें stomata बोलते हैं. The massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through this pores of the for the purpose of photosynthesis. इधर से gaseous exchange take place होता है, but it is important to note here that exchange of gas occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. मतलब leaves अकेले पे नहीं होता, roots और stems पे भी होता है gaseous exchange. Since large amount of water can be lost through this stomata, the plants close their pores when they do not need carbon dioxide for photosynthesis. मतलब बहुत सारा घुस जाता है इसमें गैसेज और वो सब, तो जब भी ना जरूर हो तो वो लोग क्लोज करते रहते हैं. ऐसे सिस्टम होते हैं उनमें. The opening and closing of pores is functioned by guard cells. मतलब स्टोमाटा में भी गार्ड सेल्स होते हैं. ये दोनों गार्ड सेल्स है जो क्लोज होते हैं और खुल जाते हैं. स्टोमेटल पोर, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर. उस पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोज ऐसे हो जाता है, खुल ऐसे जाता है. The guard cells swell when water flows into them. मतलब जब वाटर फ्लो होता है उनमें तो वो स्वेल हो जाते हैं, causing the stomatal pore to open. पानी भर जाता है
तब वो ओपन होता है. सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द कार्ड सेल श्रिंक. जब श्रिंक हो जाते हैं तो क्लोज हो जाते हैं. ओके, दिस इज हाउ दे वर्क. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. Autotrophs कैसे अपनी energy requirements होते, we have talked that, but they also need other raw materials for building the body. कुछ और raw material भी चाहिए. Water is used in photosynthesis. मतलब water की बात करें कि taken from soil, roots अंदर soil से लेते हैं पानी जिससे फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. दिस मटेरियल अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron, magnesium taken from soil, and nitrogen is essential element used by in synthesizing protein and other components. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, आयरन बहुत सारे लैंड के अंदर से भी यूज करते हैं वो लोग. और नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट इन element for synthesizing protein and other compounds. This is this is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrites. इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में लेते हैं. नाइन्थ में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल. फॉर इट और इट इज टेकन अप एज एन organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. तो ये सब पढ़ा होगा कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन लेते बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं लेगुमिनियस प्लांट के को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. और वो सब पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल. तो मैं अभी नाइट्रोजन साइकिल जो शुरू नहीं करने वाली, मैं हेटेरोटॉपिक पे ही जाने वाली हूँ अभी. Each organism is adapted to its environment. इसका environment का adapted होता है. The form adapted means इसके environment पे depend होता है. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as it is obtained by organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for a difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. Such a relaxed sentence, I guess. Okay, so I'm just explaining line by line. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organisms. मतलब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर है, उनको फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है. फॉर एग्जांपल फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी. कभी स्टेशनरी होता है लाइक ग्रास प्लांट स्टेशनरी होता है, मोबाइल लाइक would allow the difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है जिससे food organism taking the some organism break down the food material outside the body and then absorb. कुछ तो बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करके फिर इनटेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड लाइक ब्रेड मोल, yeast एंड मशरूम, ये लोग सब बाहर ही ब्रेक करते हैं और फिर खाते हैं. Others take the whole material and breakdown depend on the body design and the function. Okay, I skipped one line over. Others take in whole material and break it down inside their body. मतलब हम लोग तो अंदर ही break करते हैं. What can be taken in and broken down depend on the body design and function. मतलब लोग कैसे करते हैं वो सब उनकी बॉडी फंक्शन पे डिपेंड करता है. बाहर ब्रेक करना, अंदर करना या ब्रेकिंग नहीं करना, वो सब उनकी बॉडी डिपेंड करता है. सम अदर ऑर्गेनिज्म derive nutrition from plants or animals without killing them. उन्हें किल किए बिना उनके साथ पैरासिटिक रिलेशन होते हैं. With this parasitic nutritive strategy used by
a wide variety of organisms like Scuta, amoeba, ticks, leaves, leeches, tapeworm. ठीक है, तो ये सब करते हैं पैरासिटिक, मतलब ये मुझे ये देगा और वो मुझे मैं उनको ये दूंगी और वो मुझे ये देंगे। ओके, तो रहने के लिए जगह देंगे और मैं उन्हें खाना दूँ। How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in the entire surface. मैंने बोला जैसे एक ही surface से food भी intake करते हैं, but as the complexity of organism increases, the different parts become specialized to perform different functions. कॉम्प्लेक्स सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म की एक ही पार्ट में से खाते हैं, एक ही पार्ट में डाइजेस्ट होता है, एक ही पार्ट से एक्सक्रीट होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे बी फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अमीबा पहले तो फूड इनटेक करता है, सूडोपोडिया स्प्लिट व्हाट वी कैन से लाइक एक्सटेंड होता है, सिंगल लाइक एक्सटेंशन होते हैं, टेम्परली होते हैं, बाद में उनमें घेर लेते हैं, मतलब हाँ यूज कर रही हूँ मैं वर्ड यार, मतलब उसे कवर कर लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। और सेम वे जब जो एक्सक्रीशन भी सेम होता है कि उसे ऐसे निकालते हैं, बाद में ऐसे करके ऐसे निकाल देते हैं, उसका उल्टा कर देते एक्सक्रीशन होता है। देखा इधर रिमेनिंग ऑन डाइजेस्टेड is moved out of the surface and of the cell and thrown out. एक ही सेल होता है इसलिए एक ही सेल में से निकाल देते हैं। In a paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and the food is taken in at a specific point. उसमें एक specific point पे होता है, मतलब वो थोड़ा complex होता है, unicellular होता है, एक ही सेल वाला होता है, तो फाइनाइट शेप होता है, तो एक स्पॉट से लिया जाता है and the food is moved to this point by the movement of cilia. Cilia की मूवमेंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं सेल के अंदर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं अभी, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। Alimentary canal is basically a long tube extended from the mouth to anus. ओके, एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, मुंह से एनस तक जो पार्ट होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल है। We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happened to food once it enters our body? We shall discuss this process here. Okay. तो हमारे हाथों लेके खाने के बाद वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे। चलिए, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये अपने दिमाग में फिक्स करके रखना है, मैं बहुत ही अच्छे से को समझाऊंगी, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। We eat various types of food which has to be passed through uh, same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of same structure. When we eat something, food is also wet. Oh, this is achieved by crushing food with teeth. पहले तो teeth हम खाते हैं तो टीथ पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, फिर जो टंग है वो रोल करती है फूड को, और जो सलाइवा जो हमारे सिक्रीट्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी एनालस होता है, वो क्या करते हैं कि वो स्टार्च को
फूड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। When we eat something, we like our mouth water. It is actually not only water but the fluid like saliva secreted by the saliva. Another aspects of food we indulge in a complex nature. अभी हम ये सब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं. If it is to be absorbed from alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules. This is done by a biological catalyst called enzymes. ये मैंने बोल दिया enzymes क्या है वो. The saliva contains an enzyme called salivary amylase. Okay, enzyme contain करते हैं salivary amylase. Break down starch, which is a complex molecule to give sugar. तो फूड को स्टार्च में ब्रेक डाउन करते हैं. Food is mixed truly with saliva and moved down the mouth while chewing by muscular tongue. तो मस्क्यूलर टंग रोल करके गले में उतार देती है बकल कैविटी, माउथ की बकल कैविटी. और ये भी याद रखना है कि हमारे 32 को ध्यान रखना कि हमारे 32 टीथ होते हैं. इंसिजर्स, कैनिंग, मोलर्स, प्रीमोलर्स. ओके, ये सारा आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार. It is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has a muscular contract and rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occurs all along the guts. Guts मतलब हमारी चेस्ट कैविटी के आसपास गट्स होता है. गट्स तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब जब भी फूड जाएगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो जैसे जैसे वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते करते वो नीचे चला जाएगा. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe. Food pipe को बोलते हैं esophagus. Stomach is a large organ which is expanded when food enters it. जब food enter करता है वो expand हो जाता है. The muscular walls of stomach help in mixing food truly with more digestive juices. तो उसके क्या बोलते हैं स्टमक होता है वो म्यूकस होता है. वो म्यूकस से बना होता है. उसकी एकदम थिक लाइनिंग होती है जो जूसेस सिक्रेट करते हैं. These digestion functions are taken care by a gastric glands present in the wall of stomach. Stomach की walls पे gastric glands present होते हैं. These release hydrochloric acid. Hydrochloric acid release करते हैं. Acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? So हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. पैप्सिन और म्यूकस ये भी रिलीज होता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैप्सिन और म्यूकस चाहिए तो वो भी रिलीज होते हैं स्टमक में. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पैप्सिन. मतलब पैप्सिन का वर्क करने के लिए उन्हें एसिडिक मीडियम चाहिए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज served by the acid? The mucus protects the inner living lining of stomach from the action of acid under normal condition. म्यूकस जो प्रेजेंट होता है
इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो एसिड आपको आपका दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारी स्किन पे गिरने से हमारी स्किन तो जल जाती है। तो पेट हमारे स्टमक को कुछ नहीं होता, हमारे पेट में होल नहीं पड़ जाता, नहीं पड़ जाता क्योंकि उसमें म्यूकस होता है। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को स्टमक नॉर्मल कंडीशन पे। वी have often heard adults complaining about acidity. Okay, so can this be related with what has been discussed below above? मतलब एसिडिटी के साथ जो बात हम सुनते हैं हमारे एडल्ट के, तो वो क्या इससे रिलेटेड हो सकती है? The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle, which release it in a small amount into small intestine. स्फिंक्टर मसल होता है, कहाँ पे होता है? इधर होता है, देखो इधर होता है। मतलब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तब मुझे स्फिंक्टर मसल होता है जो एंट्री इधर भी होता है। जब भी कभी वॉमिटिंग हो जाती है तो ये खुल जाता है तो बाहर चला जाता है। एग्जिट तो हम कहते हैं फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है विच इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्टेज बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइल। बहुत कम प्लेस में कॉम्पैक्टली कॉइलिंग हुआ है, लेकिन तो भी वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन differs in various animals depending on the food they eat। मतलब इंटेस्टाइन की जो साइज है, लेंथ है, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म पे कि वो कौन सी टाइप का फूड ईट करते हैं। वो कैसे? तो ये जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर। herbivores eating herbivores eating grass need a longer small intestine to allow cellulose to be digested। herbivores जो प्लांट्स ईट करते हैं तो वो एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करने के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, मतलब लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो वो सेल्यूलोज जो होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में ही होता है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए टाइगर्स में शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fat। इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। ये लोग क्या रिसीव करते हैं कि लिवर और पैंक्रियास से सिक्रीशन रिसीव करते हैं। The food coming from stomach is acidic and has to be made alkaline for pancreatic enzymes to act। तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है उन्हें क्या सॉरी फूड जो स्टमक से आता है वो एसिडिक मीडियम वाला होता है। अगर हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करवाना है, रिएक्ट करवाना है उनके साथ, तो पहले उन्हें अल्कलाइन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अल्कलाइन फॉर्म में लाने के लिए हमें बाइल जूस चाहिए। जो बाइल जूस कहाँ से मिलता है? हमें लीवर में से मिलता है। तो लीवर में से जो बाइल जूस मिलता है तो वो क्या करता है? वो पहले तो जो फैट का ग्लोब्यूल्स होता है उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो वी रीड टेक्स्ट में क्या लिखा है वो हम पढ़े। तो bile juice from the liver accomplishes this addition to acting on a fat। मतलब वो ऐसी अल्कलाइन भी करते हैं और फैट को भी ब्रोक डाउन करते हैं, उनका दो काम है। इट डिफिकल्ट सॉरी फैट्स आर प्रेजेंट इन
intestine in a form of large which which make which makes it difficult for enzyme to act on them. बहुत फैटी होते हैं, बहुत फैटी एसिड होते हैं, लाइक चीज़ एंड ऑल खाते हैं, तो वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें एंजाइम कुछ एंजाइम्स के बारे बहुत डिफ़िकल्ट है उनके साथ एक्ट करना, तो बाइल सॉल्ट होता है, तो ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल globules, increasing the efficiency of enzyme action। तो ये बाइल जूस उनको ब्रेक डाउन करता है, जो जिससे वो पैंक्रियाटिक जूस के साथ इजीली एक्शन में आ सके। दिस इज सिमिलर टू emulsify the action of soap on the dirt that we have learned about in chapter 4। Okay, so they are talking about chapter 4, like वो न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में बात करूँ। Pancreas secrete a pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting protein। So एक तो वो trypsin वाला एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा वो लिपेज सिक्रेट करते हैं एंजाइम जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। The wall of small intestine contain gland which secrete internal juice। मतलब वो भी इंटरनल जूस सिक्रेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी। एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। The digested food is taken up by the walls of intestine। इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा उन्हें ऊपर ले जाते हैं। The inner lining of small intestine are numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area of absorption। विलीज प्रेजेंट होते हैं, विलाइज जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस इंक्रीज करते हैं। मतलब ये जो विलाइज होते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। एंड रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट है विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो सेल्स तक ले जाती है, बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो अभी जो ये फूड होता है वो एनर्जी को ऑब्टेनिंग के लिए, सॉरी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, न्यू टिश्यूज का ग्रोथ करने के लिए और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ये एनर्जी का प्रयोग होता है। द unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material। हाँ सॉरी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो विलाई से हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो वो कैरी कर जाते हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव बाय द बॉडी वायर एनस। एनस से सब निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन होता है। द exit of this waste material is regulated by anal sphincter। ये मसल्स होता है एनल स्फिंक्टर जो रेगुलेट करते हैं एग्जिट के लिए हेल्प। अब ये डेंटल कैरीज है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ये एक बार आ गया था। Caries to decay causes a gradual softening and enamel in dentine। मतलब जो टूथ डिकेज हो जाता है, इनेमल जो होता है हमारे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन एंड डीमिनरलाइज इनेमल। तो इनेमल को डीमिनरलाइज कर देते हैं, तो बैक्टीरिया इन पे अटैक करके उन्हें होल्स प्रोड्यूस कर देते हैं उनमें। So from next, you have to solve all this 5 question and answer me on the comment box.
एंड अब नेक्स्ट टॉपिक हम रिस्पायरेशन से स्टार्ट करेंगे. सो अभी आई एम एंडिंग माई मीटिंग, आई मीन एंडिंग माई वीडियो. So till then, bye bye. See you soon. Bye. Please like, share and subscribe. अबे मैंने इतने सारे वीडियो बनाए आपके लिए, कुछ तो कीजिए मेरे लिए थोड़ा सा.